हे बंद कर. आमचं लेक्चर नसतंय. Okay, in last lecture we have started with the strings concept, how to write strings on in our PHP. Okay, so what is string, that is known to all of you, but now we'll see some functions that make us to use strings effectively in PHP also. Okay, so how to write string in PHP, that we have already covered. Okay, so these are the two ways to write the PHP. Either you can write it in single quote or you can write it in double quote. Okay, if you are writing it in single quote, then variables, okay, their values will not be displayed here. Okay, if you write it in double quote, then the value of variable will be displayed in your output. Okay, so I have already explained you about this particular thing. So today we will see some operations which can be performed by using string operators. Okay, so first operator is the concatenation operator. So concatenation operator means what? So we have to join two strings together and we will display the output. Okay, so concatenation operator हमने already C language में भी देखा है और बहुत सारे languages में भी देखा है. So what is that concatenation operator mostly used? It is your dot operator. Okay, so see here, this concatenation operator. Okay, concatenation operator, you can see this is a dot operator which will be used to join two strings together. So see this particular example, this is one string. Okay, string one, and we have stored this string hello world. Okay, and string 2 is another variable in which we have stored another string 1 2 3 4. Okay, so I want to join these two strings, so what I will do, I will use this dot operator. Okay, so here echo function is used to display some message on your uh, echo is a function which is used to display some message. Okay, so here string 1, okay, that is hello world, and then dot. Okay, so dot is used to join with another string. Okay, so here we have kept here double quote double quote, so this is your one string, but it does not have any character here. Okay, so what is there? There is one space here. Okay, so why there is space? Because we want to display these two words by separated by some space, so that's why here we have kept here double quote, and inside double quote we have kept here one space. Okay, so after that again this double space is also this space is also one string here. Okay, so that's why we have to join it by using dot also again. Okay, and there is another string called as string 2. So how will be the output of this statement? The output will be string 1, that is hello world. Okay, and then there will be one space here, you can see space, and then string 2. String 2 is what? Here there is one space, and string 2 is 1 2 3 4. Like this you can do the joining of two strings in PHP language. Okay, so this is your strong string concatenation operator, that is dot. Okay, now come to your next slide. The next operator used in string function is that is string function is another string function is your strlen function. So string len, that is it gives you the length of that particular string. Okay, so strlen function is used to find the length of a string. Okay, let's find length of our string hello world here. Okay, so here you can see echo strlen, and in bracket we have written our string. So what will be the output of this particular function? It is 12 here. So how 12? So you can count the number of characters inside this particular string. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12. So here it will consider the space also. Okay, so space will be another character here. So hello world, these 11 characters, and space is another character. So that's why here output is 12.
The length of string is often used in loops or other functions when it is important to know when string ends. Okay, so ये string length function जो है वो आपको बहुत जगह पे यूज करने को लग सकता है. So this will be used in different loops so that we can know what is the length of particular string. Okay. The next function in your string is strpos function. Okay. So what is strpos function? This is used to search for a string or character within a string. Okay. strpos function जो है वो आपको string को search करने के लिए use होता है, or you can search for particular character within string also. Okay. If match is found in a string, this function will return position of the first match. Okay. So suppose I found that particular string or particular character, then what will happen? It will return the position of that first match. Okay. If no match is found, then it will return a false. Okay. So let's see how we can find string world in our string. Okay. So echo strpos function यहाँ पे use किया है देखो. Okay. See this echo strpos. This is the function that here we have used, and this is your complete string. Okay. So in this we have written two strings. One is hello world, and another by we have given one comma, and another we have written world. So what is the meaning of this particular function? It is asking you to search for this world. Okay, inside this hello world. Okay, ये hello world जो आपका पहला string है उसके अंदर ये world function world string को search करेगा. Okay, so where it is present? So it is present here. So what is the position of this world here? So here our string starts from the index 0 here. Okay, this is 0. Okay, so 0 1 2 3 4, this space is 5, and w is 6. So that's why it is showing you output here as a 6. Okay, understood this one? Okay, so this is the position of your world word in this your hello world. Okay, so likewise you can also find out the position of some character also w like this. So output will be here 6 itself. Okay, so as you see the position of string world in our string is position 6. The reason that it is 6 is that the first position in the string is 0 and not 1. ये आपको ध्यान में रखना है कि फर्स्ट पोजीशन जो रहती है आपके स्ट्रिंग की वो 0 रहती है. ओके, फर्स्ट कैरेक्टर जो रहता है आपके स्ट्रिंग में it is placed at the 0th position and not at the first position. Okay, so this is how you can use the string position function, strpos function, in your strings. Okay, to find out the current position of that particular string. Okay, now come to next slide. So this is all about, this was all about your php strings. Okay, we have seen how to write php strings and how to use some operators. Okay, we have seen concatenation operator, that is dot operator. Then we have seen the string length function, and then we have seen the strpos function. Now the next important topic in your php is the php functions. What is function? Function is piece of code which takes one more input in form of parameter and does some processing and returns a value. ठीक है, हमने function already बहुत सारे languages में देखा है. So function is what it is, some block of code, and these are the statements which are executed one after another. Okay, and sometimes we pass some parameter to these functions, and that function returns a value to us. Okay, so you have already seen many functions like f of 1, free, etc. There are many built-in functions, but php gives you option to create your own functions as well. php language में बहुत सारे functions hai which are built in, means we don't need to write their uh, function. Okay, we don't need to write their body, means we don't need to define them. Okay, so built in functions hai bahut sare, jaise ki echo function hai, print function hai. Okay, but we can create our own functions as well. So there are two parts which you should be clear to you. Okay, so first one is creating a php function. Okay, and another part is calling a php function. Okay, so in fact you have hardly need to create your own php function, because there are already more than 1000 built-in library functions created for different area, and you just need to call them according to your requirement. Okay, so for understanding, or if you want to go through all the built-in functions, then you can search for the php function reference. Okay, and you will see different useful functions over there. Okay, so how to create a function? Note,
how to create function. Okay, so it is very simple. See this particular statement. Note that while creating PHP function, its name should start with keyword function. Okay, आपको PHP में function create करना है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि the name of the function should start with the keyword function here. Okay, and all PHP code should be put inside the opening curly brace and closing curly brace as shown in the following example. So let us see a simple example. Okay, see this particular example here. Okay, now here we have written this particular PHP code here. Okay, so here we have defined one PHP function. What is how to write that PHP function? First we have to use this keyword function, and then we have to write the name of that particular function. So what is the name of this function? It is write message. Okay, and now when this it is starting of your function, opening curly brace, this is closing curly brace. Okay, and this is the body of your function. Okay, so here when this function will be called, ये function कब execute होगा? We have already seen that function will be called when we are calling that particular function. Okay, so we have to write a calling PHP function also. Okay, so here write message. Okay, so once this write message function is called here, okay, the your execution go to your calling function. Okay, called function, and once this function is called, it will go inside your body of function and it will display the message, you are really a nice person, have a nice time. Okay, so this is how you can create your own PHP functions. It is simple function. Okay, we have to just use the function keyword and write your function name and body of function. Okay, and we have to call that particular function like this. Okay, so this is very simple thing that you can understand it very easily. Okay, the next thing is, now we will see the next thing. So PHP functions with parameters. अभी जो हमने function देखा है, it was without any parameter. Okay, there was no any parameter. We have just called that function. Okay, now we can have functions which are having some parameters. Okay, PHP gives you option to pass your parameters inside a function. You can pass as many parameters you like. Okay, आपको जितने भी parameters लगते हैं उतने आप उस function को pass कर सकते हैं. Okay, these parameters work like variable inside your function. Following example takes two integer parameters and add them together and then print them. Okay, so हम एक example देखेंगे यहाँ पे, जहाँ पे दो parameters हमने pass किए हैं और ये function जो है वो दो parameters लेगा और आपको some output वहाँ पे दिखाएगा. Okay, so see this particular example. यहाँ पे एक हमने एक फंक्शन यहाँ पे डिस्क्राइब किया है, फंक्शन ऐड फंक्शन. ओके, ये फंक्शन यहाँ से फंक्शन कीवर्ड से आपने एक फंक्शन क्रिएट किया है, यहाँ पे एक फंक्शन का नाम लिखा है और यहाँ पे आप देख सकते हो दो पैरामीटर्स है, एम्परसेंड num1 एंड एम्परसेंड num2. ओके, दिस टू आर द पैरामीटर्स. सो इस फंक्शन को कॉल करते समय हमें क्या करना पड़ेगा कि कॉल करते समय आपको यहाँ पे दो वैल्यूज यहाँ पे पास करने पड़ेंगे. ओके, so you can see once this statement is executed, add function, so it will search where is this add function, so it is present here. Okay, and 10 value will be assigned to your num1. Okay, and 20 value will be assigned to num2. Okay, so what is happening here? So we have passed these two values 10 and 20. So 10 is assigned to num1 variable and 20 is assigned to num2 variable. So in this way we can have parameters inside your function. So once it is called, okay, it will go inside the body and it will execute the first statement. So what is first statement? Sum is equal to num1 plus num2. So what is num1 value? Here it is 10. Okay, and what is num2 value? It is 20 here. Okay, so 10 plus 20, it will give you 30. 30 is stored inside the sum now. Okay, then what will happen? It will print this message. Okay, echo function आपका यहाँ पे execute होगा and it will output this statement, sum of two numbers is and ampersand sum. So यहाँ पे sum variable में latest value क्या है हमारी? It is 30. So it is your output here. Okay, sum of two numbers is 30. Okay, so in this way you can call a function by using some parameters. Okay, so here we will go to the next slide again. Come to your next slide. Okay, I will just clear all these drawings.
Okay, the next topic is passing arguments by reference. Okay, now we have already learned in C language that how to call a function. There are two ways, call by value, and there is another one way, that is call by reference. Okay, जो अभी हमने example देखा है, that is example of call by value. Okay, now we will see the method of call by reference, that is passing arguments by reference. So here this means that a reference to, it is possible to pass arguments to functions by reference. Reference means what? We will pass address of that variable. Okay, instead of passing the variable value itself, we will pass the address for that particular variable. Okay, so this means that reference to variable is manipulated rather than to the function rather than copy of variable's value. Any changes made to a argument in these cases will change the value of original variable. So you can pass an argument by reference by adding ampersand. ठीक है, pass रेफरेंस कैसे पास करना है आपको, तो यहाँ पे एक एम्परसेंड ऐड करना है आपके वेरिएबल के साथ टू द वेरिएबल in either function call or inside the function definition. So see this particular example. So calling by reference. Okay, तो यहाँ पे हमने एक फंक्शन लिया है, फंक्शन add 5 ampersand num, और उसके अंदर लिखा है num is equal to num plus 5. There is another function here. ओके, ये एक फंक्शन हो गया आपका. देयर इज अनदर फंक्शन, फंक्शन ऐड 6. ओके, एंड यहाँ पे हमने एम्परसेंड नम लिखा है. ओके, यहाँ पे एम्परसेंड यूज नहीं किया है, यहाँ पे किया है. तो यहाँ पे हमने लिखा है नम इज इक्वल टू नम प्लस 6. अब ये दो फंक्शन हमने यहाँ पे डिफाइन किए. वी हैव डिफाइंड दिस टू फंक्शंस. नाउ वी वांट टू कॉल दिस फंक्शंस. ओके, सो सी हियर ओरिजिन नम, ये ओरिजिन जो वेरिएबल है उसके अंदर हमने एक 10 वैल्यू लिए, एंड वी हैव कॉल्ड दिस ऐड 5 फंक्शन. व्हाट वी हैव डन हियर, वी हैव कॉल्ड दिस ऐड 5 फंक्शन, और उसको हमने क्या किया है, 10 वैल्यू पास की है. तो आपका ऐड 5 फंक्शन कहाँ पे, दिस इज नाउ हियर. ओके, तो यहाँ पे 10 वैल्यू आ गई इस नम के अंदर. ओके, एंड num is equal to num plus 5, that is 10 plus 5, so 15 is stored in num. ओके, तो उसके बाद हम जब यहाँ पे आ रहे वापिस, तो यहाँ पे add 5 origin, यहाँ पे आउटपुट क्या दिखाना चाहिए हमको, 15 दिखाना चाहिए. बट व्हाई इट इज शोइंग 10 इन योर आउटपुट, बिकॉज नाउ हियर we are outside our function. Okay, so this is call by value method, that's why it is not showing you the updated value outside your function. It is just showing you the output as 10. Okay, so this is the difference in your call by value and call by reference. अभी यही हमने एक यहाँ पे फंक्शन को कॉल किया है, that is add 6, और यहाँ पे हमने instead of passing the value we have passed the address. Okay, यहाँ पे देखिए आप. Okay, so instead of passing value we are passing the address of this origin variable. Okay, so once this is passed, your add 6 function will be called, and inside that add 6 function there is what we have done, see again, ये जो add 6 फंक्शन है आपका, वहां पे हमने एड्रेस पास किया है नम का. तो एड्रेस के ऊपर जो वैल्यू है वो 10 है अभी. सो 10 plus 6 it will be 16, and it is updated inside your address, not at that particular value itself. Okay, so ये जो एड्रेस के ऊपर हमने चेंजेस किए डायरेक्टली, सो आप फंक्शन के बाहर भी अगर आते हैं, so it will display you the output with your updated value. So here the next echo function is showing you output as original value is 16. Okay, so this is about how to call by reference. Then next thing is PHP functions returning a value. So function can return a value using return statement. Okay, return statement जो है वो आपका use होता है function को value return करने के लिए. Okay, so return stops execution of the function and sends the value back to the calling code. You can return more than one value from function by using return array. Okay, here you can see you can return more than one value from a function using return array. ठीक है, यहाँ पे return statement आपका एक single particular value return करने के लिए भी use होता है, और similarly you can return more than one value by using return array statements. Okay, so following example takes two integer parameters and add them together and then return their sum to calling program. See this particular example here.
Okay, now let us see this example. You can see here, यहाँ पे हमने एक फंक्शन क्रिएट किया है. ओके, ऐड फंक्शन. वहां पे हमने दो पैरामीटर्स लिए, num1 एंड num2. दिस इज द बॉडी ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन. ओके, नाउ व्हाट वी विल डू, we are calling this particular function add function 10 comma 20. So 10 is passed inside num1 and 20 is passed inside num2. Okay, then it will go inside your body of function. Okay, sum is equal to num1 plus num2. तो num1 की वैल्यू है यहाँ पे 10 and num2 की वैल्यू क्या है 20 है. So 10 plus 20 it is given to your sum variable. Okay, now the updated value of sum variable is what, 30, and here we have written one statement as return sum. So what is happening, it is returning some value. So what is value of sum here, 30. So this 30 value is returned to the function from where we have called this function. Okay, ये return हो जाएगी इस add function को. तो ये 30 वैल्यू जो है वो यहाँ पे रिटर्न हो चुकी है. ओके, सो ये रिटर्न हुई वाली वैल्यू हमने कहाँ पे स्टोर की है, ये रिटर्न वैल्यू वेरिएबल के अंदर स्टोर की है. ओके, सो आई विल कॉल दिस इको फंक्शन हियर. सो रिटर्न वैल्यू फ्रॉम द फंक्शन इज इक्वल टू, सो व्हाट इज दैट, रिटर्न वैल्यू वेरिएबल जो है उसके अंदर रिटर्न वैल्यू वहां पे स्टोर्ड है. सो इट विल शो यू द आउटपुट लाइक दिस, रिटर्न वैल्यू फ्रॉम द फंक्शन इज 30. Okay, like this you can return the value from the function to some other variable. Okay, or you can also return these values in the form of arrays as well. Okay, so this is how we can return the values. Okay, now next thing we will start, setting default values for function parameters. ठीक है, अभी एक जो एग्जांपल है यहाँ पे देखिए आप, you can set parameter to have default value if function's caller does not pass it. Function prints null in case use does not pass any value to this function. यहाँ पे एक एग्जांपल है, यहाँ पे देखिए आप, फंक्शन प्रिंट में यहाँ पे हमने क्रिएट किया है. ओके, एंड एम्परसेंड पैरम इक्वल टू नल. ओके, यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू हमने पास किया है. इफ यू वांट यू कैन पास सम डिफॉल्ट वैल्यू टू दैट पर्टिकुलर फंक्शन इफ इट इज नॉट पासिंग सम वैल्यूज. सो यहाँ पे आउटपुट जो है प्रिंट मी दिस इज टेस्ट, ये प्रिंट हो जाएगा आपका. यहाँ पे दिस इज टेस्ट जो वैल्यू है वो यहाँ पे पास हो गई है, और पैरम प्रिंट पैरम पैरम के अंदर ये वैल्यू गई है और यहाँ पे वो स्टेटमेंट यहाँ पे पास हो गया है. बट सेकंड टाइम जब हमने यहाँ पे कॉल किया है वो प्रिंट मी फंक्शन को, सो वी डोंट हैव एनी वैल्यू, सो वी हैव पास्ड null value inside this param and it is showing you the null output. Okay, so like this we can set some default values for function parameters as well. Okay, then dynamic function calls. Now here it is possible to assign function names as strings to variables. Okay, तो यहाँ पे बताया गया है कि we can assign function names to string variables. ठीक है, अभी यहाँ पे देख सकते हो आप, ये जो एक फंक्शन वेरिएबल है उसको हम क्या कर रहे हैं, एक स्ट्रिंग वेरिएबल पास कर रहे हैं. ओके, से हेलो. ओके, बट से हेलो इज व्हाट, it is your function itself. Okay, rather than assigning the function we can assign the string variables to some variable here and we can call that particular function. Okay, so function holder is equal to say hello. Okay, say hello एक function string हमने यहाँ पे इस variable को पास किया है और वहां पे हमने function holder और bracket लिखा है. So function holder is nothing but what, it is say hello. So it is calling you the say hello function here. Okay, and it is displaying you output as hello. So like this you can create a dynamic function calls where you can assign function names as strings to the variables. Okay, so this was all about your functions. The next is very important topic. We are going to see how to create the forms in PHP. Okay, in yesterday's practical I have already described you how to do JSP and MySQL connectivity, and Naresh sir have described you how to do the PHP and MySQL connectivity. Okay, so that is the this is some part of that same thing. Here we will see how to create a form and how to display the output on same page itself. Okay, so what is form? A document that containing black fields, the that user can fill the data or user can select the data. What is form?
फॉर्म क्या रहता है? इट इज नथिंग बट इट इज सम डॉक्यूमेंट, ओके, विच कैन हैव सम ब्लैंक फील्ड्स लाइक टेक्स्ट बॉक्सेस और text areas or some toggle buttons like this, and user fills that form and it is sent to the server. Casually data will store in the database. Okay, so यहाँ पे मैं आपको लाइव डेमो दिखाना चाहता हूँ. Directly we will see how to create the PHP forms. Okay, so just start with our NetBeans. यहाँ पे मैंने NetBeans start किया है, देखो, ठीक है. नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर? सो नेटबीन स्टार्ट किया है. आपको आपको पीएचपी प्रोजेक्ट अगर क्रिएट करना है, इन यस्टरडेज प्रैक्टिकल सेशन नरेश सर हैव टोल्ड यू how to write PHP programs by using XAMPP server. You can write same programs in your NetBeans as well. Okay, तो आपको यहाँ पे फाइल के अंदर जाना है, न्यू प्रोजेक्ट लिखना है. ओके, यहाँ पे जाने के बाद आपको ऑप्शन आएगा PHP. सो जस्ट सिलेक्ट PHP, देन क्लिक ऑन PHP एप्लीकेशन, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन. ओके, सो यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट का नाम लिखना है एंड यू कैन राइट, you can select the next again. Okay, and after that it will ask you whether to run it on local server. Okay, so we have to select this option, running on local web server. Okay, और यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट का URL जो भी देना है आपको, वो यहाँ पे आप स्पेसिफाई कर सकते हैं. एंड यहाँ पे आपको जो है एक सिलेक्ट करना है ये ऑप्शन को, कॉपी फाइल्स फ्रॉम सोर्स फाइल फोल्डर टू अनदर लोकेशन. एंड हियर यू हैव टू गिव द लोकेशन ऑफ द फोल्डर वेयर यू हैव इंस्टॉल्ड योर XAMPP सर्वर. आपके XAMPP सर्वर के अंदर एक HTTPD फोल्डर रहेगा. ओके, सो यहाँ पे जाइए आप, आपका ये XAMPP फोल्डर रहेगा. ओके, XAMPP सर्वर आपको इंस्टॉल करना है पहले. सो गो टू योर XAMPP फोल्डर and inside XAMPP, go to your XAMPP. Okay, and inside XAMPP we have to go to the HTTPD folder as well. Okay, यहाँ पे आपको लोकेशन सिलेक्ट करना है XAMPP, and then you can see this path HTTPD docs, std docs. Okay, और उसके अंदर आपको यहाँ पे आपके प्रोजेक्ट का नाम लिखना है, प्रोजेक्ट 4. प्रोजेक्ट 4. ओके, सो ये htdocs डॉक्स में अगर आपका प्रेजेंट नहीं है, then it will not execute your program. Okay, and then click on next and then finish. तो आपका क्या होगा, यहाँ पे एक PHP प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है, PHP प्रोजेक्ट 4. ओके, so this is your initial index.php file. Okay, so this is how you can create your PHP, write your PHP programs inside your NetBeans. Okay, तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने मेरा एक फॉर्म क्रिएट किया है. I have created this simple programs project and inside that I have written this complete form.php file. So I will show you how to write files inside your PHP program. ओके, तो यहाँ पे मैं कुछ फाइल्स ओपन है वो क्लोज करता हूँ पहले. ठीक है, मुझे अभी PHP में एक फॉर्म बनाना है. सो फर्स्ट आई विल शो यू व्हाट काइंड ऑफ फॉर्म आई वुड लाइक टू क्रिएट. इसको एग्जीक्यूट करता हूं मैं. मेरा जो URL है यहाँ पे इट इज complete form dot php. So are you able to look at this screen? Okay, so here you can see this kind of form I want to display. Okay, तो यहाँ पे एक नेम लेना है, टेक्स्ट बॉक्स लेना है, उसके बाद ईमेल लेना है, टाइम लेना है, क्लासेस लेना है, एक जेंडर लिया है और यहाँ पे दो बॉक्स टॉगल बटन्स लिए हैं हमने, मेल और फीमेल. देन एक सिलेक्ट बॉक्स लेना है हमें, जहाँ पे मैं अलग अलग लैंग्वेजेस सिलेक्ट कर सकता हूँ. और उसके बाद यहाँ पे एग्री बटन लिया है और लास्ट में एक सबमिट बटन दिया है. सो जैसे यहाँ पे यूजर सब एंट्री करेगा, ओके, व्हेन योर यूजर विल फिल ऑल दिस डिटेल्स. ओके, सपोज आई विल फिल हियर अमोल. Okay, so when I will click on submit button, the output should be displayed on the same screen itself. Okay, इस तरीके का मुझे PHP फॉर्म यहाँ पे क्रिएट करना है. Okay, so I will click on submit button. So you can see here the output, your name is Amol. Okay, यहाँ पे बाकी के फील्ड्स मैंने यहाँ पे एंटर नहीं किए, तो यहाँ पे मुझे वैलिडेशन यहाँ पे दिखा रहा है. Okay, so how to do this particular task, that I will describe you through the code now. Okay, so let us go to our NetBeans again. यहाँ पे आइए, आपको यहाँ पे कोड दिख रहा है. ओके, सो आई विल जूम इट लिटिल बिट.
मैग्नीफायर यूज करेंगे थोड़ा। सो सी दिस इज योर कंप्लीट फॉर्म डॉट पीएचपी फाइल। ओके, तो यहाँ पे आपका HTML कोड स्टार्ट हो गया है। उसके बाद हमने यहाँ पे आपके बॉडी के अंदर यहाँ पे PHP कोड स्टार्ट किया है। सो फर्स्ट व्हाट वी हैव डन, वी हैव डिफाइंड सम वेरिएबल्स एंड सेट देम टू द एम्प्टी वैल्यूज हियर। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये वेरिएबल्स क्रिएट करना है, नेम ERR, ईमेल ERR, जेंडर ERR, वेबसाइट ERR। तो ये वेरिएबल्स किस लिए क्रिएट किया हमने, if suppose there is some error or we want to show the error, that is name is required or email ID is required, so we will store such values or messages inside these variables. So that's why we have created these empty variables here. Okay, then आपका जो भी वैल्यू है, नेम है, ईमेल है, जेंडर है, जो यूजर ने राइट किया है, उसको स्टोर करने के लिए हमने ये 5 वेरिएबल्स क्रिएट किए, यहाँ पे 6 वेरिएबल्स। ठीक है, एंड एट द इनिशियल लेवल these are having the value as null value here. ओके, उसके बाद हमने क्या किया है, इफ डॉलर सर्वर रिक्वेस्ट मेथड इज इक्वल टू पोस्ट। ओके, जब हम सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो उस टाइम यहाँ पे पोस्ट मेथड के साथ कौन सी वैल्यू है, ठीक है, वेदर योर नेम इज एम्प्टी। ओके, अगर आपका नेम एम्प्टी है तो वहां पे हमें मैसेज डिस्प्ले करना है, नेम इज रिक्वायर्ड एंड इट इज स्टोर्ड इन वन नेम ERR वेरिएबल। ओके, ये कब कॉल होने वाला है ये स्क्रिप्ट, when you call on the submit button. Okay, so first we will see what is there in our code here. Okay, ये आपका डिजाइन का पार्ट है। ओके, यहाँ पे हमने फर्स्ट वी हैव टेकन वन स्पैन क्लास। ओके, यहाँ पे हमने एरर यहाँ पे डिस्प्ले किया है एंड इट इज शोइंग यू रिक्वायर्ड फील्ड। आपको ये आपको एट द इनिशियल नेम के ऊपर एक